ट्रांजिशन टू क्लास सोसाइटी यूनिट नंबर 15 है ये, ठीक है। सो कैसे मॉडर्न क्लास सोसाइटी डेवलप हुई थी यूरोप में, विच वॉज गवर्न बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड ब्रॉडर एक्सपेंशन ऑफ कैपिटलिज्म. It analyzes how traditional social orders based on birth and privilege were gradually replaced by class structures defined by economic roles, wealth and political power. तो जो तुम्हारा पहले के ज़माने में क्या था कि ट्रेडिशनल जो सोशल स्ट्रक्चर था दैट वाज वेरी मच गवर्न्ड बाय बर्थ एंड प्रिविलेज, नाउ इट वाज रिप्लेस्ड बाय इकोनॉमिक रोल्स, वेल्थ एंड पॉलिटिकल पावर, ठीक है. नाउ द राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड modern political institutions in Europe fundamentally transformed the society from 18th century onwards. The old social orders based on medieval tripartite division of nobility, that is the clergy, peasantry, nobility, clergy and the peasantry gave way to new class formations like the bourgeois and the working class. However, the transition was not abrupt. It was shaped by a complex interplay of economic change, political struggles and cultural transformations, ठीक है. तो the rise of capitalist economy and modern political institutions in Europe. The rise of a capitalist economy and modern political institutions in Europe, ये दो चीज़ें अगर हम बताएं, fundamentally transformed society from the 18th century onwards. 18th century onwards, ठीक है. The old social orders based on the medieval tripartite division, of nobility, clergy and the peasantry gave way to new class formations like the bourgeois and the working class. ये नए थे. However, the transition was not abrupt. It was shaped by a complex interplay of economic change, political struggles and cultural transformations, ठीक है. अब मॉडर्न क्लास सोसाइटी को कैसे डिफाइन करोगे? देखो, पहले क्या था, यानी कि मेडिवल वर्ल्ड में सोशल स्टेटस वाज टाइड टू फ्यूडल रिलेशनशिप्स. नोबल्स डिराइव्ड वेल्थ एंड स्टेटस फ्रॉम द लैंड ओनरशिप एंड मिलिटरी सर्विस, while the clergy claimed privileges through their spiritual role. Peasants and artisans labored under the feudal dues. And had limited social mobility. These groups, nobility, clergy, and the commoners, formed the three estates with privileges and obligations that were legally defined and sanctioned by the tradition. तो ये तो पुराना व्यवस्था बता दिया मेडिवल के समय में कि सोशल स्टेटस तुम्हारा फ्यूडल रिलेशनशिप से गवर्न होता था या लैंड ओनरशिप से गवर्न होता था. द नोबल्स derived wealth through land ownership as well as the military service that they offered to the monarch, ठीक है. While the clergy claimed privileges through their spiritual role, जबकि सारी घिसाई peasants and artisans को लेबर वर्क करना पड़ता था under the obligation of feudal dues. अब ये जो तीन थे इन्हीं को three estates बोलते हैं, with the privileges and obligations that were legally defined and sanctioned by the tradition. तो privileges and obligations, they were legally defined and sanctioned by the tradition. Then the modern class society that emerged in the 19th century by contrast was based on economic roles. तो ये economic roles पे depend था rather than the inherited privilege, ठीक है. Wealth and class were determined by one's relationship to the means of production. ये अच्छी लाइन है. Wealth and the status, that is the class in the society, that was governed by how one individual is related to the means of production, whether he is a landowner or a capitalist or a worker. Each occupied distinct places in the new economic order. Now this shift was also ideological. Now not abrupt. It replacing justifications of birth and divine right with ideas of merit, free labor and free market based wealth, ठीक है. तो अभी क्या है, बर्थ और डिवाइन राइट्स के बजाय जो ये प्रिविलेज in the new modern Europe की बात कर रहे हैं, that was this new privilege was based on merit, free labor, not free labor, paid labor or wage labor and market based wealth, ठीक है. तो कैसे हुआ ट्रांजिशन? मैंने बताया abrupt तो था नहीं. तो the transition from feudal to capitalist society involved erosion of feudal structures. This is how it was brought about, and emergence of capitalist markets. Erosion of feudal structures and emergence of capitalistic markets. Central to this was the decline of feudal hierarchies and the growth of trade and industry. Capitalistic market तो तभी आएगा ना जब इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रेड होगा. और feudal structures ध्वस्त कब होंगे? जब feudal hierarchies ध्वस्त होंगी, जैसे कि ट्राइपार्टिट या ट्रिपल एस्टेट सिस्टम. Urban merchants and artisans often
the forerunners of bourgeoisie began to challenge the old order through demands for lower taxes, fewer trade restrictions and more political representation. और process की बात की जाए तो ये जो merchants और artisans थे, they are often considered as the forerunner of the bourgeoisie or the representative of the bourgeoisie. They started putting up new demands like lower taxes, fewer trade restrictions and more political representation. This process was not uniform across Europe. In some areas, especially England and parts of the northwestern Europe, bourgeois liberal society emerged relatively early as a result of a strong trade and early industrialization and political revolutions. तो this process was not uniform. कुछ जगहों पे जैसे कि इंग्लैंड एंड नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करें, bourgeois liberal societies emerged relatively early as a result of a strong trade, early industrialization, and political revolutions. In other areas like Eastern Europe and Russia, feudal structures persisted longer, delaying the full emergence of modern class society. तो ये एक डिफरेंस बता दिया इसने कि कहाँ पे पहले हुआ था, कहाँ पे बाद में. तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप की अगर बात करो, इंक्लूडिंग इंग्लैंड, तो bourgeois-led liberal societies, they emerged relatively early as a result of a strong trade and early industrialization and early political revolutions compared to Eastern Europe and Russia, जहाँ पे feudal structures stayed for a little longer, delaying the full emergence of modern class society. तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन वगैरह ये जो ईस्टर्न यूरोप है वो. Elements of survival of the old. Even as capitalist markets expanded, many elements of the old order persisted. ठीक है. The landed aristocracy remained a powerful social and political force in most of Europe. Land ownership continued to confer not just wealth but also social prestige and political influence. In many countries, the aristocracy adapted by investing in commercial agriculture and industrial ventures, integrating into the capitalist economy while maintaining their elite status. तो यहाँ पे ये है कि भाई अगर now in the new class system, a person's position or status was governed by how he is related to the means of production. तो यहाँ पे भी तो elites जो पहले लैंड ओनर्स थे वही forerunners हो जाएंगे ना. ठीक है. कैसे? जो पहले अरिस्टोक्रेसी थी उन्होंने इस न्यू सिस्टम में कैसे अडेप्ट किया. They were the first and no doubt they also must be the largest investors in the commercial agriculture or in every possible capitalistic mode of building wealth. So whether it be commercial agriculture or industrial ventures, तो वही लोग आए, ज़्यादा beneficiaries भी वही हुए, integrating into the capitalist economy as well, while maintaining their erstwhile elite status, which was rather built by the feudal characteristics. ठीक है. The church also retained a significant power, particularly in southern and central Europe. It was a landowner and a moral authority, often reinforcing conservative social orders that resisted radical change. तो चर्च के पास भी काफ़ी ज़मीन थी और मोरल अथॉरिटी भी थी, तो वो भी इसमें मतलब उसका भी दर्जा कम नहीं हुआ. द चर्च ऑल्सो रिटेन सिग्निफिकेंट पावर पर्टिकुलरली इन सदर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ऑफन owing to its ownership of land and its moral authority, often reinforcing conservative social orders that resisted radical change. One of the key insights of the unit is that the emergence of modern class society did not immediately erase older social identities. People still identified with local communities, religious groups, and regional traditions. However, these identities were increasingly overshadowed by new class-based identities tied to work, wealth, and market roles. ऐसा नहीं है कि ये ख़त्म हुआ तो ये नया वर्ग आया, ये भी था बट ये छोटा रह गया. मतलब जो नया वर्ग आया वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, thus overshadowing the older traditions and older identities. These identities were increasingly overshadowed by the new class-based identities, which was related to work, wealth, and market roles. The landed aristocracy saw their social dominance challenged but remained influential. The landed aristocracy saw their social dominance challenged but remained influential. Their prestige, social codes, and political power in parliaments and military institutions ensured they continued to shape Europe's societies into the early 20th century. The bourgeoisie rose as a dynamic economic class, driven by commerce, industry, and banking. They championed liberal political reforms, nationalism, and the expansion of markets. Their wealth gave them growing social prestige, allowing them to challenge and sometimes merge with the older aristocracy. ये अच्छा लाइन है कि चैलेंज कुछ जगह किए बट कुछ जगह मर्ज भी हो गए
older aristocracy में, ठीक है. So it was a dynamic economic class which was driven by commerce, industry, trade and markets, banking. They championed the liberal, और वो liberal political reforms के फेवर में थे, nationalist तो थे ही, और market expansion के भी फेवर में थे. Or their wealth gave them growing social prestige, allowing them to challenge and sometimes merge with the older aristocracy. The working class emerged as a distinct group defined by wage labor. ये भी इनकी खासियत थी. वर्किंग क्लास भी एक वर्ग था बर्जुआई के साइड बाय साइड, जो कि डिफाइन किया गया था वेज लेबर. अनलाइक peasants who owned or worked land, workers in urban factories or mines had little or no property. इनके पास कोई वो नहीं था property. This economic dependence fostered class consciousness, especially as industrial capitalism brought harsh conditions. This economic dependence fostered class consciousness. This economic dependence fostered class consciousness. This economic, अब ये लोग जो थे इनके पास प्रॉपर्टी तो थी नहीं, तो they were somehow dependent on the ones who had land. This economic dependence fostered class consciousness, especially as industrial capitalism brought harsh conditions, long hours, low wages, and unsafe workplaces. The working class responded by forming trade unions, socialist parties, and other collective organizations that demanded better conditions and political rights. Working class अभी भी प्रताड़ित था काफ़ी, उसको trade unions, socialist parties, and other collective organizations बनाना पड़ता था for better conditions at work as well as political representation. The unit also explores how the nation-state became a powerful and new entity in this period. Nationalism offered an alternative to class and local identities. Nationalism offered an alternative to class and local identities, promising unity and political self-determination. In many cases, bourgeois liberalism and nationalism worked together. The bourgeois sought national markets and political reforms, while nationalism mobilized broader populations behind these goals. ये समझ नहीं आया. What I'm saying is, in many cases, bourgeois liberalism and nationalism worked together. The bourgeois sought national markets and political reforms, while nationalism mobilized broader populations behind these goals. ये अगर हम पूछें, can you please explain the following line that I'm about to say in very simple school type explanation? So here it starts. In many cases, bourgeois liberalism and nationalism worked together. The bourgeois sought national markets and political reforms, while nationalism mobilized broader populations behind these goals. Please explain this. So the ChatGPT has to say that in many cases, bourgeois liberalism and nationalism work together. What do you mean by that? This means the bourgeois were the middle class people who owned businesses or land. They wanted to make it easier to buy and sell goods in the national markets and have a fairer government, which was rather promoting such national market entry. Nationalism is the idea that people in a country should feel proud and work together as one group. When these two things, bourgeois liberalism and nationalism, joined forces, it was like a teamwork. The bourgeois wanted better business and fairer laws, and nationalism helped get everyone excited about those ideas. How? Nationalism was like a cheerleader, helping the middle class ideas reach more people and encouraging them to support these changes. In the name of nation building, maybe? So together they worked to make trade easier, improve government, and bring people together to support these ideas. अच्छा, तो वही है कि bourgeois liberalism and nationalism work together. Bourgeois liberalism and nationalism work together. ठीक है. However, nationalism could also compete with class-based identities. While workers often shared grievances across national lines, nationalist governments tended to focus on loyalty to the state rather than class solidarity. In some regions, peasant conservatism aligned with nationalism, creating tensions with more radical working class movements. नहीं आ रहा है समझ में ना? Okay, so please explain in greater detail that while you have just explained that how nationalism and bourgeois liberalism worked together and sort of complemented each other. Now, contrarily, please tell me that, however, at several instances, nationalism could also compete with class-based identities, such as while workers often shared grievances across national lines, industrial workers, I mean, nationalist movements tended to focus on loyalty to the state rather than class solidarity. In some regions, peasant conservatism aligned with nationalism, creating tensions with more radical working class movements. Nationalism and bourgeois often worked together because they both wanted a united country and fairer government for trade and business, right?
But now nationalism versus class identity. However, nationalism did not always fit perfectly with the interests of workers or peasants. Workers in the factories had shared problems: long hours, low pay, unsafe conditions. These problems were similar in many countries. So workers often felt more connected to each other as workers, like a big team or factory workers everywhere. Nationalism said, be loyal to your own country first. Nationalism is about being proud of your country and working for its success. This could be different from focusing on workers' rights everywhere. And hence the tension. When nationalism was strong, it told workers, forget about workers in other countries, just think about our country. But workers still had things in common with workers in other countries. So sometimes nationalism and workers' class solidarity did not match. Okay. Then competing identities क्या था? The interplay between class and national identities was central to modern European politics. For example, in France, nationalism and republicanism became intertwined, while in Germany, nationalism took a more conservative and aristocratic form under Bismarck. In Eastern Europe, nationalism often reflected ethnic and regional conflicts as well as economic divides. ये line अच्छी है. In France, nationalism and republicanism intertwined, while in Germany, nationalism took more conservative and aristocratic form. In Eastern Europe, however, nationalism often reflected ethnic conflicts as well as economic divides. The role of centralized monarchies played a key role in facilitating or resisting these transitions. Monarchs often allied with the bourgeois to promote trade and undermine feudal privileges that restricted economic growth. However, they also relied on aristocratic support and the social order provided by the old estates. This balancing act shaped political conflicts in the 18th and 19th centuries. So, monarchs often allied with the bourgeois to promote trade and undermine the feudal privileges that restricted economic growth. However, they also relied on aristocratic support and the social order provided by the old estates. ठीक है, तो monarchs were somehow vacillating. Then new classes and new conflicts. By the 19th century, the bourgeois and the working class had become the main classes in the capitalist economy. The bourgeois' economic power translated into political influence as they pushed for constitutions, parliaments in the market-friendly laws. The working class in turn organized to demand better wages, working conditions and eventually political representation. तो कुल मिला के bourgeois and the working class यही दो main classes बन गए थे capitalist economy में 19th century में. Whereas in rural areas, the peasantry experienced similar pressures. While some peasants became rural capitalists, others lost and became wage laborers. These divisions within the peasantry mirrored broader class conflicts. So, in conclusion, Unit 15 emphasizes that the transition to modern class society was not a simple story of one class replacing another. It was a complex process involving economic change, political struggle, and shifting identities. Landed elites adapted to capitalism in some regions, while the bourgeois rose to dominate in others. Landed elites adapted to capitalism in some regions, while the bourgeois rose to dominate in other regions. The working class and peasants often found themselves caught in these transformations, developing their own collective identities and political demands. This nuanced understanding challenges linear narratives of progress. It shows that the rise of modern class society was shaped by deep conflicts and the survival of older orders even as new social forces emerged. The result was a society more dynamic and complex than the rigid hierarchies of feudal Europe, laying the groundwork for modern social and political struggles that would follow. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं conclusion में कि rise of modern class society in Europe was shaped by deep conflicts and survival of older orders, even as the new forces emerged. As a result, a society very dynamic and complex was formed, unlike the rigid hierarchies of the feudal Europe, laying the groundwork for modern social and political struggles. ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा क्या बोलते हैं यूनिट नंबर 15. ठीक है, फिर इसके पहले क्या था, ये था द सोशल क्लासेस इन यूरोप. ठीक है, इसको देखते हैं अगले वीडियो में. तो ये यूनिट नंबर 14 है, द सोशल क्लासेस इन यूरोप, और इसमें हम लोग क्या देखेंगे. दिस यूनिट एग्जामिन्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल क्लासेस इन यूरोप फ्रॉम 18th to early 20th century, focusing on how different classes, landlords, peasants, and the bourgeois and workers became integrated into the emerging capitalist economy. मतलब ये 4 classes मैंने बताई. एक landlords हो गया. How different classes, जिसमें कि पहले है landlord, फिर peasantry, फिर bourgeois,
bourgeoisie or workers. They became integrated into the emerging capitalist economy. It highlights that while broad patterns of change can be identified, each region had its unique trajectory shaped by local economic, political and cultural factors. मतलब कि broad patterns जो है ना, जो मोटा मोटा इन 4 वर्गों में चेंजेस आए वो मोर और लेस सेम ही थे ऑल अक्रॉस द यूरोप, बट कहीं कहीं कुछ रीजनल वेरिएशंस देखने को मिले ड्यू टू यूनिक लोकल इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स. ठीक है. Now, the 18th and 19th centuries were crucial for the formation of modern class society in Europe. Industrialization and the expansion of trade created new forms of work and wealth, challenging the traditional dominance of landlords and reshaping the relationships between the classes. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से ना कि सिर्फ न्यू फॉर्म्स ऑफ वर्क और न्यू फॉर्म्स ऑफ वेल्थ बनी लोगों की, बल्कि ऑल्सो जो ट्रेडिशनल डोमिनेटिंग लैंडलॉर्ड्स थे और उनका जो रिलेशनशिप होता था डिफरेंट क्लासेस से ऑफ द सोसाइटी वो भी बदल गया. हाउएवर द पीस एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज, द पेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द चेंज वेरीड अक्रॉस इंडस्ट्रियल एंड नॉन इंडस्ट्रियल एरियाज. वही चीज़ जो मैं पहले पैराग्राफ में भी बताया था, with some regions maintaining older social structures well into the 19th century. Then landlords and integration into capitalism. Landlords कैसे घुसे, मतलब तब्दील हुए कैपिटलिज्म में. Landlords remained a central part of European society throughout this period. In England, the landed aristocracy successfully adapted to the capitalist economy. ये successfully adapt हो गए. पहली बात तो their wealth had already been growing in the 17th and 18th centuries thanks to the profitable agricultural ventures like sheep farming and investments in trade, mining and industry. तो ये सब primary sectors of economy है. Mining तो comes in primary sector. Trade भी ऐसा कुछ खास नहीं है. Industry, however, is secondary sector. So, all in all, they successfully adapted to the capitalist economy, owing to their already profitable agricultural investments in sheep farming and investments in trade, mining and industry. ठीक है. Political changes, including the Glorious Revolution and the enclosures of common lands, strengthened the economic position of the landed gentry. तो ये जो Glorious Revolution है and the enclosures of the common lands strengthened the economic position of the landlords. By the 19th century, English landlords had diversified their investments and were integral to the capitalist system, blending aristocratic values with commercial interests. In France, the situation was more complex. The nobility was divided into two main groups: the nobles of the sword, with military origins, and the nobles of the robe, who had acquired titles through bureaucratic service or purchase. तो nobles of robe bureaucratic वाले में थे और nobles of the swords वो military origin के थे. Both of them comprised the French nobility, and many nobles clung to the feudal privileges, demanding dues from peasants even as commercial agriculture expanded. This inability to adapt to the capitalist economy meant that when the French Revolution came, the nobility's basis of dominance was shattered, though it partially revived after the Restoration. तो फ्रांस में थोड़ा सा देर तक इन लोग का दबदबा रहा था नोबिलिटी का, और इवन व्हेन द कमर्शियल एग्रीकल्चर हैड एक्सपेंडेड इन फ्रांस, ये लोग तब भी एक्सप्लॉइट किए जा रहे थे. एंड जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया तब नोबिलिटी को सबसे ज़्यादा झटका लगा, डोमिनेंस उनका शैटर हो गया. हालांकि बाद में फिर थोड़ा पार्शली रिवाइव हुआ था. ईस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ डिफरेंट स्टोरी है. जैसे प्रूशिया एंड अदर पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न जर्मनी, द जंकर्स, दे वर कॉल्ड एज द लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स. They strengthened their dominance through capitalist agriculture, employing wage labor and maintaining political power through authoritarian regimes. यहाँ पे authoritarian regimes थी. Their integration into capitalism was more direct in some western German regions, while in the east feudal elements persisted longer. In Russia, the landed aristocracy was tied to the state through reforms initiated by Peter the Great. They enjoyed privileges like serfdom, which linked them to peasantry in a distinctly feudal system. Even with the emancipation to the serfs in 1861, the landed nobility retained economic and political power until the Russian Revolution, when their dominance was finally broken. तो रशिया में भी काफ़ी देर तक था. Aristocracy was tied to the state through reforms initiated by Peter the Great. तो aristocracy was the other face of the state. और ऐसा संभव किसने किया? Peter the Great ने. They enjoyed privileges like serfdom, which linked them to the peasantry in a distinctly feudal system. ठीक है. Even with the emancipation of the serfs in 1861, the landed nobility retained the economic and political power
up until the Russian Revolution. So that was the story of Russia. ये थोड़ा सा जर्मनी का थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है. ईस्टर्न यूरोप presented a different story, such as Prussia की अगर बात करें, and other parts of eastern Germany, the Junkers, they were the landed aristocrats. उन्होंने अथॉरिटेरियन regimes का सहारा लिया, कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर का सहारा लिया, वेज लेबर सिस्टम्स अडॉप्ट किए. Their integration into the capitalism was more direct in some western German regions, while in the east feudal elements persisted longer. तो वेस्ट में तो जल्दी आ गया कैपिटलिज्म, लेकिन ईस्ट में देर तक फ्यूडलिज्म बना रहा. एंड दे वर दैट वाज ड्यू टू द जंकर्स. ठीक है, उसके बाद रशिया का बता दिया और ये बता दिया. अब फ्रांस में मैंने बताया था 2 प्रकार की नोबिलिटी थी और यहाँ भी देर तक था, अल्टीमेटली विच शैटर्ड इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और यहाँ ये ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्या है कि इंग्लैंड की अगर बात करें, the landed aristocracy successfully adapted to the capitalist economy. Their wealth had already been growing in the 17th and 18th century thanks to profitable agricultural ventures like sheep farming and investments in trade, mining and industry. Political changes including the Glorious Revolution and the enclosures of the common lands. Glorious Revolution and the enclosure of common lands strengthened the economic position of the landed gentry. By the 19th century, English landlords had diversified their investments and were integral to the capitalist system, blending aristocratic status with commercial interests. तो ये सबसे अच्छा ब्लेंड कहाँ देखने को मिला? इंग्लैंड में देखने को मिला. फ्रांस में जबकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, इतना आसान नहीं था ब्लेंडिंग दोनों प्रकार की जो नोबिलिटी थी, स्वॉर्ड और रोप की. ये अपने फ्यूडल प्रिविलेजेस से कुछ ज़्यादा ही क्लंग थे, डिमांडिंग ड्यूज फ्रॉम द peasants even when the commercial agriculture had expanded a lot. And this inability to accept the capitalist economy meant that when the French Revolution came, इन्हीं लोगों को सबसे ज़्यादा झटका भी झेलना पड़ा. हालांकि कुछ बाद में रिवाइवल, ये लोग अपना रिस्टोरेशन ऑफ फ्यूडल प्रिविलेजेस कुछ हद तक वापस से रिवाइव कर लिए. ईस्टर्न यूरोप की बात करें, प्रूशिया और जो जंकर्स वगैरह थे ईस्टर्न जर्मनी में, वो अथॉरिटेरियन रिजीम्स और पॉलिटिकल पावर थ्रू अथॉरिटेरियन रिजीम्स का इस्तेमाल करते थे, वेज लेबर सिस्टम का इस्तेमाल करते थे और कैपिटलिस्ट एग्रीकल्चर. लेकिन यहाँ भी वो था, देयर इंटीग्रेशन इनटू द कैपिटलिस्ट वाज मोर डायरेक्ट इन सम वेस्टर्न जर्मन रीजन्स, व्हाइल इन द ईस्टर्न फ्यूडल एलिमेंट्स परसिस्टेड लॉन्गर. यहाँ भी ईस्ट में ज़्यादा देर तक फ्यूडल एलिमेंट्स बने रहे थे. रशिया की बात करें तो यहाँ भी अरिस्टोक्रेसी को तो बिल्कुल स्टेट का एक दर्जा दे दिया गया था, स्टेटहुड का, although some form of statehood, and they enjoyed privileges like serfdom which linked them to the peasantry in a distinct feudal system. Even with the emancipation efforts of emancipation of the serfs in 1861, the landed nobility of Russia retained their economic and political power and up until the Russian Revolution of 1917. उसके बाद peasants and rural transformation की बात करें, so the peasantry, though declining as a distinct social group, remained central to the rural economy in most parts of the Europe. हालांकि social group में इनका जो एक position था within the social context वो तो घटता जा रहा था, but economic wise देखें तो rural economy में इनका अभी भी योगदान था काफ़ी parts of Europe में. In England, enclosures and capitalist farming practices ended the peasant class as it had existed. और 2 सबसे बड़ा कारण क्या था कि रूरल पेजेंट्री जो थी उनका दमन हुआ. उसमें पहला था इंक्लोजर्स ऑफ कॉमन लैंड और दूसरा कैपिटलिस्ट फार्मिंग प्रैक्टिसेस. इससे इनका दमन हो गया एज अ सोशल क्लास, क्रिएटिंग अ शार्प डिवाइड बिटवीन कैपिटलिस्ट फार्मर्स एंड रूरल लेबरर्स. ठीक है, तो पेजेंट्स फिर पेजेंट्स में वर्गीकरण हो गया इन प्रोसेसेस से. कुछ तो इसमें समा के अपना निकल गया अच्छा, तो they became the capitalist farmers, whereas the others were left behind as rural laborers, creating a sharp divide. फ्रांस में बात करें, so that was the story of I think England. हाँ, फ्रांस की बात करें अगर तो the peasantry gained from revolution's land settlements, owning and working their own plots. However, they remained wary of radical political movements and were more likely to align with conservative forces, adapting to the capitalist economy without fully abandoning traditional ways of life. I didn't quite understand that. Let me ask. So I'm going to say a paragraph in ChatGPT, okay? And please explain it in very simple terms, like easily understandable to a school kid.
So here it goes. In France, the peasantry gained from the revolution's land settlements, owning and working their own plots. However, they remained wary of radical political movements and were more likely to align with conservative forces, adapting to the capitalist economy without fully abandoning traditional ways of life. Please explain this paragraph in very simple terms. Let's see what ChatGPT has to say. So here is what the ChatGPT says. So simple explanation क्या है? When the French Revolution happened, farmers, which were the peasantry, were given land that they could own and work on themselves. This was really good for them. But even though they got this land, they didn't fully trust big political changes that wanted to make everything completely new. Instead, they usually supported more traditional ideas called conservative forces and found ways to join the new money system, that is capitalism, while still keeping some old farming ways and traditions. तो मतलब थोड़ा रिलक्टेंट थे, सिनिकल थे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम्स वगैरह के प्रति, while retaining their old traditional farming ways and traditions. ठीक है, फिर से एक बार देख लो. When the French Revolution happened, farmers called peasantry were given land. तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट था कि the farmers got their land which they could own and work on themselves. This was really good for them, but even though they got this land, they didn't fully trust the big political changes that wanted to make everything completely new. Instead, they usually supported more traditional ideas like conservative forces and found ways to join the new money system while still keeping some old farming ways and traditions. Okay, so that was the story with France. अभी हमने यहाँ देखा था इंग्लैंड में क्या था, पेजेंट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ था. Enclosures and capitalist farming practices ended the peasant class as it had existed, creating a sharp divide between capitalist farmers and the rural laborers. तो यहाँ इंग्लैंड का तो कहानी हमको देखने को मिल रहा है, फ्रांस का हमने देख लिया. अब जर्मनी में क्या है कि peasants survived and even prospered in regions like Bavaria and near industrial centers like the Ruhr. तो वहाँ के तो peasants अच्छे निकल गए, जबकि और commercialization of agriculture allowed some large peasants to become proto-capitalist farmers, while smaller peasants became rural laborers. This created internal class divisions within the peasantry itself. यहाँ भी वही इंग्लैंड वाला हाल हो गया. ब्रेवेरिया और रूर जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ में तो कमर्शियल फार्मर्स काफ़ी प्रोटो कैपिटलिस्ट फार्मर्स में बदल गए. आई मीन लार्ज पेजेंट्स जो थे वो प्रोटो कैपिटलिस्ट फार्मर्स में बदल गए और दे वर डूइंग गुड ओइंग टू द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. लेकिन अदर पार्ट्स ऑफ, अगर हम जर्मनी की बात करें, वहाँ पे स्मॉलर पेजेंट्स जो थे वो तो बिल्कुल ही रूरल लेबरर्स में तब्दील हो गए और इससे फिर एक डिवाइड बन गया, क्लास डिवीजन विद इन द पेजेंट्री इटसेल्फ. यही चीज़ वहाँ हुई थी इंग्लैंड में. रूरल इकॉनमी में तो उनका एक रिकग्निशन था, लेकिन इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे एंक्लोजर्स जैसी पॉलिसी और कैपिटलिस्ट फार्मिंग की वजह से वहाँ पे भी इंटरनल क्लासेस इन पेजेंट्री बन गए थे. तो एक तो क्लास बना था कैपिटलिस्ट फार्मर्स का और एक दूसरा था रूरल लेबरर्स का. और फ्रांस का हम बता ही दिए कि दे डिडंट कम्प्लीटली अडॉप्ट द कैपिटलिस्ट फार्मिंग सिस्टम, दे और द न्यू सिस्टम्स विच न्यू कैपिटलिस्ट सिस्टम्स पूरी तरह अडॉप्ट नहीं किए थे फ्रांस में, एज दे कंटिन्यू टू फॉलो देयर ओन ट्रेडिशंस एंड फार्मिंग वेज इवन आफ्टर द रेवोल्यूशन. ठीक है, अब रशिया की बात करें, यहाँ पे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था. द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट मार्केट्स स्प्लिट द पेजेंट्री इनटू अ स्मॉल क्लास ऑफ वेल्दियर कुलैक्स. यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्रोटो कैपिटलिस्ट फार्मर्स में बदल गए थे. यहाँ पे क्या हुआ कि कमर्शियल एग्रीकल्चर से और कैपिटलिस्ट मार्केट के ग्रोथ से पेजेंट्री के कुछ एक वर्गों को ये कुलैक्स में बदल दिए थे. They were the rich farmers and a larger class of poor peasants. तो यहाँ भी डिवीजन बन गया. The kulaks became increasingly hostile to the landed aristocracy, contributing to the political upheavals of the early 20th century. लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये हुई कि ये जो kulaks, that is the rich farmers जो निकले कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और कैपिटलिस्ट मार्केट्स की मदद से, ये जो kulaks रिच फार्मर्स बने थे, slowly over time they started fighting against the landed aristocracy and later causing political upheavals in the early 20th century. अब bourgeois की बात करें तो in the 19th century is often described as the age of bourgeois in Western Europe. This class consisting of, अब bourgeois में कौन कौन आता है, बैंकर्स होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, सर्विस क्लास, बेसिकली सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लास वाले, ठीक है, कुछ हद तक ट्रेडर्स भी आ जाएंगे इसी में,
ठीक है। तो दिस क्लास कंसिस्टिंग ऑफ बैंकर्स, industrialists, merchants emerged as the dominant economic and social forces in country like England, France, Belgium, and Netherlands. These bourgeois capitalists invested in urban property, industry, and trade, consolidating their power as the aristocracy's economic role declined. तो ये चूँकि owing to their मतलब इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स में जो बर्जॉय था, दे इन्वेस्टेड हैविली इन द अर्बन प्रॉपर्टी, ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स वगैरह, जिसकी वजह से ये डायरेक्ट अपना पोजीशन चैलेंज कर लिए, मतलब कंसोलिडेट कर दिया और डायरेक्टली एरिस्टोक्रेसी के रोल, इकोनॉमिक रोल को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप द राइज ऑफ बर्जॉय वॉज स्लोअर। तो ये तो इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम और नेदरलैंड में काफ़ी तेज़ी से हुआ बर्जॉय का उत्थान, जबकि अगर हम ईस्टर्न यूरोप की बात करें, राइज ऑफ बर्जॉय वॉज स्लोअर। फ्यूडल स्ट्रक्चर्स एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स हिंडर्ड देयर ग्रोथ, क्योंकि वहाँ पे फ्यूडल स्ट्रक्चर्स बहुत देर तक बने रहते, और फ्यूडल स्ट्रक्चर्स थे तो फिर अथॉरिटेरियन रेजिम्स भी रहेंगी वहाँ पे काफ़ी समय तक। इन रशिया फॉर इंस्टेंस द बर्जॉय वॉज स्टिल अ रिलेटिवली वीकर क्लास एट द टाइम ऑफ 1917 रेवोल्यूशन, ठीक है। Now the lower middle classes and urban life. Below the bourgeois were the lower middle class shopkeepers, clerks, small scale artisans and petty bourgeois. Their social status was precarious, caught between the wealthier bourgeois and the working classes. Economic insecurity made them conservative and individualistic, often resistant to radical social change. Urban life in the 19th century was marked by a sharp division between wealthy neighborhoods and overcrowded working class districts. The bourgeois enjoyed modern conveniences and cultural pursuits, while workers and lower middle classes faced harsh living conditions and economic uncertainty. ठीक है, तो ये भी एक देखने को मिला कि एक साइड तो जो बर्जॉय था वो मॉडर्न कन्वीनियंस का लाभ उठा रहा था, कल्चरल परस्यूट्स में लग गया था, हायर परस्यूट्स में, जबकि वर्कर्स एंड लोअर मिडिल क्लासेस फेस्ड हार्श लिविंग कंडीशंस एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। वही चीज़ यहाँ भी लिखी है कि below the bourgeois were the lower middle classes, shopkeepers, small scale artisans and petty bourgeois. Their social status was precarious, caught up between wealthier bourgeois and the working classes. Economic insecurity made them conservative and individualistic. ये लाइन अच्छी है। Economic insecurity made them conservative and individualistic, often resistant to radical social change, ठीक है। Now working classes की बात करें, industrialization created a working class डिफाइंड बाय वेज लेबर इन फैक्ट्रीज। ऐसा एक वर्ग बना दिया जो कि वेज लेबर के द्वारा डिफाइन किया जा रहा था फैक्ट्री सिस्टम में या माइंस में या अर्बन सर्विस सेक्टर्स में। दिस क्लास वाज नॉट मोनोलिथिक, इट इंक्लूडेड स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड लेबरर्स एंड वेरियस रीजनल एंड नेशनल डिफरेंसेस। वर्कर्स फेस्ड लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस। Over time, this led to the growth of class consciousness and the formation of labor movements and socialist parties. Working class जो था, ये एक वर्किंग क्लास काफ़ी डिफाइनिंग एक नया वर्ग बना जिसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं थ्रू द न्यू सिस्टम ऑफ वेज लेबर इन फैक्ट्रीज, अर्बन सर्विसेज एंड माइंस। एंड इसमें तुम्हारे कुछ स्किल्ड वर्कर्स थे, कुछ अनस्किल्ड थे, और वर्कर्स की कॉमन समस्या ये थी अक्रॉस द यूरोप की वो लॉन्ग आवर्स काम करते थे, लो वेजेस, डेंजरस कंडीशंस, जिसकी वजह से फिर लेबर मूवमेंट्स हुए और कुछ सोशलिस्ट पार्टीज़ बनी लेबरों के हित के लिए। इन रूरल एरियाज द वर्किंग क्लास included agricultural laborers, often former peasants who had lost their land. These workers shared many of the grievances of their urban counterparts, including poor housing and limited rights, political consciousness and class struggle. So ये नया यूनिट आ गया क्या? नहीं, नया यूनिट नहीं आया है। Political consciousness और class struggle स्टार्ट हो गया। So the unit emphasizes that the emergence of new classes also led to new forms of political consciousness. जैसे एक ये बना, ये क्या बोलते हैं, ये वर्किंग क्लास एक नया क्लास बना दैट वाज डिफाइंड मच बाय द वेज लेबर सिस्टम, लेबर वेज सिस्टम, ठीक है। एंड उनकी प्रॉब्लम्स थी लॉन्ग आवर्स, लो वेजेस, डेंजरस कंडीशंस, एंड दे गेव राइज टू लेबर मूवमेंट्स एंड सोशलिस्ट पार्टीज़। तो जैसे वो एक नया वर्ग बना, उसी तरह से जो अर्स्टवाइल पेजेंट थे उसमें दो नए वर्ग बन गए। एक एलिट रिच फार्मर्स का बन गया, दोज हू रीप द बेनिफिट्स ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर, और एक जो पुअर फार्मर रह गए, दे गॉट कन्वर्टेड टू रूरल लेबरर्स। तो जो न्यू एमर्जेंस ऑफ सच न्यू क्लासेस ऑल्सो लेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, ठीक है। द बर्जॉय सपोर्टेड लिबरल एंड नेशनलिस्ट
causes seeking free markets and constitutional reforms, whereas the working class meanwhile became a force for socialist and labor movements. अब देखो जो बर्जॉय था, जो रिच हो गया था, they advocated liberal policies, for nationalistic causes, liberal economic policies कह सकते हो, ठीक है, seeking free markets and constitutional reforms, ऐसा भी और जोड़ सकते हो, humanistic policies को एडवोकेट करते थे बर्जॉय, whereas the working class वो they gave rise to socialism and labor movements challenging the dominance of the bourgeois and the landed classes. तो न्यू क्लासेस के emergence से हमें एक न्यू पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस देखने को मिली लोगों में across the classes. Peasants were often ambivalent, बीच में फंस गए peasants, sometimes supporting the conservative causes that protected their land interests, and sometimes joining radical movements in times of crisis. This complexity underscores the class identity was never static or one-dimensional. तो conservative forces क्या थी यहाँ पे? Conservative तो वही होंगे ना, एक liberal हो गया, liberal कौन थे? बर्जॉय थे. Conservative कौन होगा? जो बर्जॉय के नीचे होंगे. क्या वो वर्किंग क्लास थे? नहीं. वर्किंग क्लास कैसे थे? वर्किंग क्लास ये थे, सॉरी, लोअर मिडिल क्लासेस थे कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव एज वेल एज इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है. तो वही चीज़ यहाँ लिखा है कंक्लूजन में कि कहाँ गया कि पेजेंट्स जो थे ना, दे वर एम्बीवैलेंट, समटाइम्स कंजर्वेटिव कॉजेज़ को वो एडवोकेट करते थे सो एज टू प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअलिस्टिक इंटरेस्ट्स सच एज देयर लैंड, एंड समटाइम्स जॉइनिंग रेडिकल मूवमेंट्स इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस, ठीक है. सो ये हो गया. अब इसका कंक्लूजन ये है कि यूरोपियन सोशल क्लासेस कैसे अमालगमेट हुए थे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, वो बता रहा है कंक्लूजन. While landlords adapted differently across regions, the bourgeois emerged as a dominant force in Western Europe. The working class and lower middle classes faced harsh conditions but also developed a growing sense of collective identity and in the form of political consciousness या political power, ठीक है. तो ये अच्छा कंक्लूजन एक हो जाएगा, ठीक है. अब अगला यूनिट देखते हैं. सो डेमोग्राफी, ठीक है. सो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर से इसका बस वीडियो बनाने के लिए दोबारा पढ़ लेते हैं. देखो, सो दिस यूनिट एक्सप्लोर्स डेमोग्राफिक चेंजेस दैट अकर्ड इन यूरोप बिटवीन 1750 एंड 1850, ठीक है. द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल स्ट्रक्चर्स और द चेंजेस इन सोशल स्ट्रक्चर्स एंड वेरियस कल्चरल प्रैक्टिसेस. तो ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है. ये सारी की सारी चीज़ें डेमोग्राफी से कैसे जुड़ी है. यूनिट इज़ स्ट्रक्चर टू गाइड रीडर्स थ्रू वेरियस की टॉपिक्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरीज, डेटा सोर्सेज, पॉपुलेशन ट्रेंड्स एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स लाइक फर्टिलिटी, मैरिज, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन. ऐसा है कि इस वक्त तो 1750 से 1850 के बीच यूरोप में एक जनरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो हुआ ही था, ये सबको पता है. एंड दे वर लार्जली ड्रिवन बाय द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल. अब इसको थियोरेटिकली एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से अगर जोड़ें, विच मीन्स दैट अक्रॉस द वर्ल्ड एनी काइंड ऑफ सोसाइटी 3 स्टेजेस से गुजरती है. सबसे पहले क्या होता है, पहले इस फेज़ में हाई फर्टिलिटी और हाई मोर्टेलिटी होता है विच लीड्स टू स्लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. दूसरे फेज़ में मोर्टेलिटी तो कम हो जाती है लेकिन फर्टिलिटी अभी भी सस्टेन रहती है हाई, एंड दिस इज़ द फेज़ वेयर रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ अकर्स. एंड फाइनली अ मॉडर्न फेज़ आ जाता है जिसमें कि लो फर्टिलिटी एज वेल एज लो मोर्टेलिटी, which means that the population then becomes stable, and I'm saying stable, not declining. तो stable हो जाती है. However, this theory has been challenged by more nuanced views emphasizing regional variations, ठीक है. अब recent advances in historical demography include using powerful computational methods to analyze large data sets, moving beyond simplistic linear models. जैसे अब एक Princeton European Fertility Project था, Princeton European Fertility Project, which collected data from 700 provincial level units of Europe to test the theory's validity. कौन सी theory की validity? Whether or not industrialization has a direct correlation with population growth, ठीक है. तो इसने क्या पाया? Revealing that fertility decline didn't always correlate with industrialization. ऐसा नहीं है कि industrialization होगा तो fertility rate कम हो जाएगा, but instead reflected cultural practices tied to language, ethnicity and regional identity. कि इसके रीजंस कहीं ना कहीं लैंग्वेज से भी जुड़े हो सकते हैं, एथनिसिटी से भी, और रीजनल आइडेंटिटी से भी जुड़े हो सकते हैं. तो ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था प्रिंसटन यूरोपियन
क्या है, प्रिंसटन यूरोपियन फर्टिलिटी प्रोजेक्ट, ये कोट कर सकते हो कि 700 प्रोविंसेस से पॉपुलेशन डेटा निकाला और फिर ये देखा। और क्या किया गया इस क्षेत्र में, डेमोग्राफर्स रिलाई, अब कुछ टूल्स हैं जो डेमोग्राफर्स यूज़ करते हैं, जैसे पैरिश रजिस्टर्स होता है, PARISH, पैरिश रजिस्टर्स, वाइटल रिकॉर्ड्स, अर्ली सेंससेस जो हुए थे, तो ये 3 आप लिख सकते हैं। फिर पैरिश रजिस्टर्स फर्स्ट मेंटेन्ड बाय चर्चेस इन द लेट medieval period, kept records of baptism, marriages and burials, providing valuable insights into demographic patterns. So parish registers were maintained by the churches. However, these records are not uniform across the Europe. For example, England के Anglican registers, which is a type of parish registers, they were less complete compared to the continuous parish records of churches from France and Nordic countries. So parish registers of different countries show different data. और एक और तरीका होता है फैमिली रिकन्स्टिट्यूशन एंड बैक प्रोजेक्शन मेथड। फैमिली रिकन्स्टिट्यूशन एंड बैक प्रोजेक्शन मेथड, दे हैव बीन क्रूशल इन एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ सेंसस डेटा। तो वो ये बैक प्रोजेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, बैक डेट में प्रोजेक्ट कर लेते हैं बाय एस्टिमेटिंग पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ reliable census data. So these are the family reconstitution and back projection techniques. So family reconstitution links birth, marriage and death data within a family. ठीक है, एक फैमिली को पकड़ो और उसका हिस्ट्री पूरा खंगाल मारो, उसमें कौन कौन बर्थ लिया, कौन शादी किया, कौन डेथ होगा ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, से क्या मिल जाता है फिर, तो एक डिटेल्ड इंसाइट मिलता है इनटू फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फैमिली। However, इसमें ड्रॉबैक ये है कि इट ओनली कवर्स द स्टेयर्स, दैट इज़ द पीपल हु स्टे इन द फैमिली। ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन को रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है, या फिर अर्बनाइजेशन। जब दूसरा मेथड होता है बैक प्रोजेक्शन, विच वॉज डेवलप्ड बाय कैम्ब्रिज ग्रुप, विच अलाउज डेमोग्राफर्स टू एस्टिमेट हिस्टोरिकल पॉपुलेशन बाय लिंकिंग सेंसस डेटा विद अर्लियर रिकॉर्ड्स। तो इसके लिए भी लेकिन तुम्हें क्या चाहिए, इसके लिए सेंसस रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है, लिंकिंग सेंसस डेटा विद अर्लियर रिकॉर्ड्स, ठीक। तो ये होता है क्या, बैक प्रोजेक्शन मेथड कैम्ब्रिज ने बनाया था। अब कुछ ट्रेंड्स देख लेते हैं 1750 से। तो मोटा मोटा 1750 में पॉपुलेशन ऑफ यूरोप वाज 60 मिलियन और बाद में 116 मिलियन हो गई 1850 में। एंड दिस इंक्रीज वाज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस द यूरोपियन कॉन्टिनेंट। इंग्लैंड एंड द इंडस्ट्रियलाइजिंग रीजन्स ऑफ द नॉर्थ यूरोप एक्सपीरियंस्ड अ रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज, while the alpine areas like Switzerland which grew more slowly. जर्मनी का भी ईस्टर्न साइड निकालो तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल रीजन्स सॉ हायर ग्रोथ्स, पॉपुलेशन ग्रोथ्स दैन द इंडस्ट्रियलाइजिंग वेस्टर्न रीजन्स, एंड सदर्न जर्मनी लैग्ड बिहाइंड बोथ, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्ट क्या बताए, पहले तो हम लोग 1750 में पॉपुलेशन 64 मिलियन था लगभग, 1850 में 116 मिलियन हो गया, ये लिख सकते हैं। उसके बाद इंग्लैंड में क्या है कि तुम्हारा इंडस्ट्रियलाइजिंग रीजन्स में ज़्यादा रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुआ, जबकि एल्पाइन रीजन्स लाइक स्विट्ज़रलैंड में नहीं हुआ। जर्मनी के ईस्टर्न एग्रीकल्चरल रीजन में ज़्यादा तेज़ी से हुआ, जबकि वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड जर्मनी एरिया में नहीं हुआ, ठीक। सदर्न जर्मनी तो बिल्कुल ही पीछे रह गया। नाउ द ग्रोथ वॉज फ्यूल्ड बाय डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी। ध्यान रखना, डायरेक्टली कह देना कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है, दैट इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट, सिंपली बिकॉज लोग कम मरे हैं, ठीक है, इसलिए पॉपुलेशन राइज हुआ है। ऑल्सो चेंजेस इन मैरिज एंड फर्टिलिटी पैटर्न्स की वजह से भी और इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड लिविंग कंडीशन की वजह से भी चेंज हुआ है पॉपुलेशन का। नॉनदलेस वॉर्स हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि नेपोलियनिक कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, वो भी कभी कभी पॉपुलेशन सेटबैक्स करते थे। अब माइग्रेशन की बात करें तो इंटरनल माइग्रेशन वाज वाइटल इन बूस्टिंग अर्बन पॉपुलेशन। इंटरनल माइग्रेशन होता था तो उसमें बस एक ही होता था कि रूरल से अर्बन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज, विथ सिटीज़ ऑफन ग्रोइंग डिस्पाइट डेथ रेट्स एक्सीडिंग द बर्थ रेट्स। तो वहाँ पे अर्बनाइजेशन कवर कर लेता था जो लॉस ऑफ पॉपुलेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन बिकेम सिग्निफिकेंट बाद में जाके 19th सेंचुरी में। फॉर एग्जांपल आफ्टर द आयरिश फेमाइन ऑफ 1840s about 1/8 of population of Ireland emigrated, मतलब छोड़ के चले गए। Similarly, Germany and Switzerland also experienced high emigration in response to agricultural crisis. तो माइग्रेशन में भी इंटरनल माइग्रेशन बता दिए, वो अर्बन सिटी इंडस्ट्रियलाइज सिटी की तरफ होता था इंटरनल, और वहाँ इतना तेज़ी से होता था कि कभी कभी डेथ रेट ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती थी। दूसरा कारण हमने बताया कि एक्सटर्नल माइग्रेशन काफ़ी बाद में 1840s के आसपास हुआ, आयरिश फेमाइन और जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में एग्रीकल्चरल क्राइसिस होने की वजह से एक्सटर्नल माइग्रेशन हुआ या फिर एमिग्रेशन।
फिर मैरिज पैटर्न्स की अगर बात करें तो प्री इंडस्ट्रियल यूरोप जो था वहाँ पे मैरिज वॉज टिपिकली डिलेड, ठीक है। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला यूरोप कैसा तो होगा, पैसा तो कम होगा ना उस वक्त, तो वहाँ पे marriages were typically delayed until couples could establish a household, resulting in lower fertility. इस वजह से lower fertility थी, and than might be expected in absence of contract. ठीक है, the so-called European marriage pattern was characterized by late marriage ages and significant proportions of lifelong celibates, especially in the Western Europe. तो Western Europe की बात करें तो वहाँ पे Western Europe में ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ लाइफ लॉन्ग सेलिब्रेट्स देखने को मिल जाते थे, स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोप, और लेट एज मैरिज होती थी. दिस पैटर्न एक्टेड एज अ ब्रेक ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ कंपेयर टू ईस्टर्न यूरोप वेयर मैरिज वाज अर्लियर इन एज एंड मोर यूनिवर्सल. तो ईस्टर्न यूरोप में जल्दी हो जाती थी और यूनिवर्सल थी, ठीक है. और प्री इंडस्ट्रियल, तो ये तो हमने ईस्ट और वेस्ट का बता दिया, और प्री इंडस्ट्रियल और पोस्ट इंडस्ट्रियल का बता दें तो प्री इंडस्ट्रियल में ऐसा था कि मैरिज वाज टिपिकली डिलेड. क्यों? क्योंकि पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हाउस होल्ड इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले सेटल होना है, ठीक. तो इस वजह से लो फर्टिलिटी थी प्री इंडस्ट्रियल यूरोप में. नाउ कुछ साइंटिस्ट्स या डेमोग्राफर्स हैं जिनका नाम है, जैसे एक है हजनल, HAJNAL, एक है रिगली, एक है स्कॉफील्ड. So these three people, they emphasize the importance of marriage age and proportion of married in explaining changes in fertility. In England, these factors accounted for much of the population increase in the 18th century, while in Ireland, earlier marriage contributed to high fertility rates. ठीक है, कम एज पे अगर कोई कपल शादी करता है तो उसमें फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हाई रहती है, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, सच एज इन आयरलैंड. और यही बात इन तीनों ने बताई थी. जबकि इंग्लैंड में these factors accounted for much of the population increase in the 18th century. Hajnal, Wrigley and Schofield emphasized the importance of marriage age and proportion of married in explaining changes in fertility. In Ireland, earlier marriages contributed to higher fertility rates. ठीक है. Mortality क्यों होती थी? Epidemics होती थी, या wars होती थी, या famines होती थी. These crises were significant. Gradual improvements in living standards and public health played larger role in reducing mortality. The decline of smallpox after 1720, improvement in sanitation and better nutrition contributed to this trend, declining mortality, although regional differences remained significant. Also, जो classical Malthusian perspective था कि population growth एक threat है to the resources, which even inevitably leads to famine and poverty unless checked by preventive measures. ये भी कहीं ना कहीं आज जो लेटर बाद में स्टडीज़ और रिसर्च हुआ, ये भी माल्थूजियन की थ्योरी को रिजेक्ट किया और बोला कि टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी हद तक माल्थूजियन के जो पर्सपेक्टिव है उसको रिजेक्ट कर देता है, कि अगर टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी सही है तो फिर इवन इफ द पॉपुलेशन ग्रोज मोर दैन द रिसोर्सेज ग्रोज, वी कैन स्टिल सस्टेन विदाउट एनी इमीडिएट क्राइसिस. फिर 19th century and beyond. So the final section considers the later phases of demographic change, marked by general declining fertility beginning 1870s. This decline, known as demographic transition, spread across Europe unevenly and was influenced by factors like urbanization, changing economic roles, and evolving social norms. Urbanization was itself driven more by diversification of economy, such as the rise of services and modern industries, than by decline of agriculture. ये भी एक अच्छा पॉइंट है. 1870s में एक जनरल डिक्लाइन देखा गया फर्टिलिटी का, ठीक है, अक्रॉस द यूरोप, हालांकि unevenly distributed, which influenced so that was influenced by factors like urbanization and changing economic roles. Now urbanization क्यों बढ़ा? Simply क्योंकि एग्रीकल्चर घट गया? नहीं. Urbanization इसलिए बढ़ा because there was a greater division of labor, there was greater diversification of economy and greater economic roles, industrial roles. Wars and migration also significantly reshaped Europe's demography landscape in the 20th century, यानी कि later phases में. World War I जो हुआ था 1914 के आसपास, उसकी वजह से काफ़ी massive out migration हुआ था, including demographic losses and shifts, altered population structures and national identities. ठीक है, तो ये हो गया. अब एक conclusion देख लो कि while general patterns of transition can be identified across the Europe, but regional and cultural differences played crucial roles in shaping the specifics of demographic behavior.
The unit highlights that historical demography has moved beyond simple models to embrace a more nuanced understanding of how social, economical, and cultural factors interact to shape population patterns over time. ठीक है, अब इसके बाद जो है फैमिली वाला बचता है, उसको देखते हैं अगले में. ओके, सो ये एक यूनिट बची है यूरोपियन फैमिली, अभी कर लेते हैं. हालांकि पिछली यूनिट से मिलती जुलती है डेमोग्राफी से, तो इसको भी कर लेते हैं. माइक एडजस्ट कर लें. सो यहाँ पे हम देखेंगे यूरोपियन फैमिली एज अ सोशल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, highlighting its evolution over time and its interaction with economic and political developments. The family has long been recognized as a fundamental social unit, but historians only began to study it systematically in the 1960s. ये इंट्रोडक्शन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं कि द फैमिली हैज़ लॉन्ग बीन रिकग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल सोशल यूनिट, बट द हिस्टोरियंस ओनली बिगैन टू स्टडी इट systematically from the 1960s. Earlier studies in sociology and anthropology emphasized the family's role in shaping social order, but historians took longer to see it as worthy of detailed historical inquiry. ठीक है, पहले सिर्फ इसका फैमिली का स्टडी सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में किया जाता था. how family forms the society, or what is the role of family in a larger context of social order. But historians from 1960 onwards थोड़ा सा डिटेल में देखने लगे इसको, फैमिली को. Right. Then the family was not merely a unit of reproduction. It also played crucial roles in production, consumption, socialization, and social security. In some cases, it even had political functions, especially in rural communities where kinship networks could influence local power structures. ठीक है, तो मतलब फैमिली जो है, it was not merely a unit of reproduction. Family was not merely a unit of reproduction. It also played crucial roles in production, consumption, socialization, and social security. Production, consumption, socialization, and social security. So it was not just means of reproduction, it also had a role in production, consumption, socialization, and social security. And also to an extent, it could influence power structures, especially in rural communities where a large part of the power structure was dependent on the kinship network. Defining the family has always been complex because its roles vary depending on context, economic, social, and cultural. For example, marriage often created new family units, but ties to the family of origin were rarely severed. So, while creating new family units, at the same time, ties with the old or the original family also remains. So, so this way, marriage in terms of family building is a very unique concept. In practice, young people frequently spend part of their lives as members of families other than their birth family, working as servants or apprentices. This flexibility challenges the notion of a single unchanging family model. ठीक है, family membership and household structure. The concept of family membership is fluid. For example, a person could belong to multiple families during different stages of their life, as a child in their parents' household, as a servant in another family's household, and later as the head of their own household. This shifting membership means historians must use cohort-based studies, tracing individuals across their lifespans to understand family dynamic. ठीक है, तो ये लिख सकते हैं कि a person goes, या a person belongs to multiple families during the different stages of one's life. जब हम बचपन में अपने पेरेंट्स के हाउस होल्ड में रहते हैं, and maybe then we become servant in an organization or another family's household, and later sometime we also get chance to become head of our own household. And this shifting membership means historians must use cohort based studies, tracing individuals across their lifespans to understand family dynamics. तो मतलब यही है कि फैमिली डायनामिक्स को पढ़ने के लिए हमें एक व्यक्ति के कोहॉर्ट बेस्ड स्टडी करना चाहिए, ट्रेसिंग इंडिविजुअल्स ties, especially in his overall lifetime. Household structures, in contrast, are more easily quantified because of consistent record keeping by states and churches. Household listings typically note the head of the household, relationships between members, and details such as the age and birthplace. This allows historians to study household size, composition, and variations across regions and classes. Family reconstitution, a method of linking parish records of births, marriages, and death
offers insights into demographic behaviors like birth spacing, illegitimacy, and family limitation. However, it cannot reveal more qualitative aspects like social networks and psychological dimensions of family life. For these, historians rely on indirect evidence such as manorial court records or ceremonial roles like choosing a godparent to infer social ties and mentalities. अब ये मुझे समझ नहीं आया ठीक से. फैमिली रिकॉन्स्टिट्यूशन जो एक मेथड होता है studying the parish records, especially related to births, burials, and marriages. It gives some insight into demographic behaviors like birth spacing, illegitimacy, and family limitation. However, it cannot reveal more qualitative aspects like social networks, ठीक है, and the psychological dimensions of the family life. ठीक है, इतना कर लो बस. Then historical change क्या है? A major question in family history has been whether the Industrial Revolution brought a dramatic shift in family structures. Early interpretations claimed that industrialization destroyed the extended family model where multiple generations co-resided and replaced it with the nuclear family, characterized by parents and their children living independently. This new view saw industrial work and urbanization as forces that reduced family size and broke kinship ties. तो ठीक है, इसमें क्या समझना है? ठीक है. Early interpretations claimed that industrialization destroyed the extended family model where multiple generations co-resided and replaced it with the nuclear family, characterized by parents and their children living independently. This view saw industrial work and urbanization as forces that reduced family size and broke kinship ties. However, research by historians like Peter Laslett and John Hejnal challenged this idea. Laslett's studies of English households before the Industrial Revolution revealed that nuclear family was already the dominant model in the northwestern Europe long before industrialization. Rather than a sudden break, family structures showed continuity with relatively stable household sizes and compositions. तो इसमें बस ये ध्यान रखो कि इस व्यू पॉइंट को कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट कौन दे रहा है इस व्यू पॉइंट से? लैसलेट एंड हेजनल, इन्होंने एक कॉन्ट्रास्टिंग व्यू पॉइंट ये दिया कि इंग्लिश हाउसहोल्ड्स की स्टडी की और ये पाया कि इवन बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन nuclear family was already the dominant model in the northwestern Europe long before the industrialization. Rather than a sudden break, family structures showed continuity with relatively stable household sizes and compositions. Laslett found that while extended and STEM families did exist in certain contexts like some areas of Poland and Hungary, they were not the norm in most of the northwestern Europe. The nuclear family model with parents and children forming a separate household predominated. In England, average household sizes were similar to those in other regions, but this was due in part to the presence of servants and apprentices who were counted as household members. ये देखो, ये भी एक बात पता चल रही है. एक ये कि लैसलेट ने तो ये रिजेक्ट कर दिया और बोला कि while extended families did exist in certain contexts like some areas of Poland and Hungary, they were not the norm in most of the northwestern Europe. ठीक है. So even before industrialization, extended STEM families were not a feature of northwestern Europe. However, they did exist in some areas like Poland and Hungary. This was given by Laslett. Also, that the nuclear family model with parents and children forming a separate household predominated northwestern Europe में. England में average household sizes were similar to those in other regions, but this was due in part to the presence of servants and apprentices who were counted as household members. ठीक है. तो इंग्लैंड तो आई थिंक नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है जहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होनी चाहिए, कम मेंबर्स होने चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था. वहाँ पे भी नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेम्बर्स इक्वल थे, इवन इक्वानिमस विद द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द पोलैंड और हंगरी. और लेकिन उसका कारण ये था कि उसमें वहाँ पे सर्वेंट्स और अप्रेंटिसेस जो रहते थे इंग्लैंड में हाउस होल्ड में, उनको भी फैमिली मेम्बर्स मान लिया जाता था. Now comparing families across regions and times, though the Cambridge Group's comparative research detailed in works like Household and Family in past time identified key features of Northwestern Europe household. Northwestern में जैसा हम बताए late age of marriage था, similar ages of spouses थे, बहुत difference नहीं था, significant proportions of unrelated household members थे. Northwestern हाँ, तो significant proportions of unrelated household members like servants or apprentices and a dominance of nuclear households. ये सब फीचर्स थे. ठीक है. ये कैम्ब्रिज ग्रुप ने किया था स्टडी. ठीक है. ये नॉर्थ वेस्टर्न में.
These features reflect an economic system where young people often worked as servants before marriage, delaying family formation and reducing overall fertility. तो इससे क्या पता चल रहा है? एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम पता चल रहा है जहाँ पे जवान लोग पहले काम करते हैं किसी दूसरे के घर पे बिफोर एक्चुअली मैरिंग देमसेल्व्स एंड देन डिलेइंग द फैमिली फॉर्मेशन एंड रिड्यूसिंग ओवरऑल फर्टिलिटी. तो ये नॉर्थ वेस्टर्न था. जबकि ईस्टर्न यूरोप का बताएं तो they often had earlier and nearly universal marriage, leading to higher fertility and different household dynamics. The presence of servants and apprentices in the northwestern Europe meant that even nuclear households were not isolated. Household composition was more fluid and complex क्योंकि उनको भी family members माना जाता था. फिर economic change से कैसे जुड़ा है family? So this unit also explores how economic variables like age at marriage and rates of celibacy responded to changing economic and social contexts. देखो समझो कैसे. Economic opportunities influenced marriage patterns. For example, in regions where apprentices or domestic service were common, young people married later, allowing them to accumulate savings and skills before establishing independent households. तो ये भी है. मतलब ये उसको एक रिवर्स तरीके से देखो. जहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ थी अप्रेंटिस का काम करने या सर्वेंटशिप का काम करने के लिए, टू बी प्रिसाइज नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में, इंग्लैंड में, वहाँ पे यंग पीपल मैरिड लेटर. तो ये हम कह सकते हैं कि द टाइप ऑफ इकोनॉमिक मिलियू जो होता था सोसाइटी में उसके हिसाब से फैमिली बिल्डिंग डिसाइड होती थी. सिमिलरली द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन डिड नॉट अब्रप्टली रीशेप फैमिली स्ट्रक्चर्स. इंस्टेड it built upon existing patterns of household formation and family organization. The economic roles of family members changed slowly, adapting to new opportunities and challenges. तो ये भी हो गया कि ये abruptly नहीं किया था family structures वगैरह को. Industrial Revolution did not abruptly reshape it. Instead, it built upon existing patterns of household formation and family organization. यहाँ पे वही starting की line याद आ रही है कि new families were made, but the ties with the older families or the older structure of families were not completely severed. With family mentalities and social networks. Beyond structure and size, the unit acknowledges the importance of studying mentalities, that is, the shared ideas and values about family, kinship, and social obligations. These shaped how families responded to crises like death or economic hardship. While data on mentalities is harder to obtain, indirect evidence such as legal disputes or choices of ceremonial roles can offer glimpses into these internal worlds. तो यहाँ पे ये है कि beyond structure and size, the unit also acknowledges the importance of studying mentalities, and हम family mentality की बात कर रहे हैं. That is the shared idea in a family and values about family kinship and social obligations. So ये जो collective opinion होता है एक family का, mentality होती है. These shaped how families responded to situations like crisis, like death or economic hardship. अब इसके बारे में डेटा नहीं है, बट फिर भी पता किया जा सकता है indirectly by following the patterns of legal disputes in a family or choices of ceremonial roles that a family undertakes can offer some glimpse into these internal worlds. तो कुल मिला के यूनिट 13 से ये पता चलता है कि family in Europe was never a static institution. Household structures were deeply shaped by economic needs and cultural norms. While the nuclear family was dominant in many parts of Europe before industrialization, that is the Northwest, regional differences and the presence of servants and apprentices meant that family life was more complex than earlier models suggested. This nuanced view challenges the idea of a single European family model and instead highlights the diversity and adaptability of family structures over time. It also underscores that changes in family life were gradual and intertwined with broader economic and social transformations rather than the abrupt product of industrialization alone. ठीक है, तो ये हो गया हमारे आज के 4 यूनिट.